molecular basis of inheritance. Last part, DNA का fingerprinting. See now, it's combination of genetics, DNA structure, and obviously the biotechnological processes. Okay, so studying it at this level will help you and you can understand it in better way. So we discussed there are a variety of DNA in human genome. We have seen the graph. In that part, junk DNA repeats, right? So ये junk DNA है, ये repeated जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस बार बार प्रेजेंट होते हैं, those are small tandem repeats. They are on density gradient centrifugation satellite like present near the bulk DNA, so they are satellite DNA. This basis, ये जो टोटल DNA हमको अलग अलग प्रकार का मिल रहा है, उसका बेस है पॉलीमॉर्फिज्म. डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में छोटे छोटे बदलाव होते गए और वो बदलाव या तो क्रोमोसोम के फॉर्म में है, या तो जेनेटिक लेवल पे है, या फिर न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे है. उसकी वजह से हमको डीएनए के पास अलग अलग प्रकार मिलते हैं. सो सी, first what we are discussing about polymorphism. The DNA shows variety of polymorphism. DNA fingerprinting is based on DNA polymorphism. Okay, so as we know, we have DNA which is similar for entire Homo sapien 99.9%. उसमें से ये रिपीट भी सबके पास है, लेकिन उसका लोकेशन, उसका नंबर, एक ऑर्गेनिज्म के पास 100 रिपीट है तो दूसरे के पास 101 रिपीट है. Okay, so these variations are important as far as DNA fingerprinting is concerned. Its location on the gene is determining the genetic maps. So these repeats are the base of genetic mapping as well as DNA fingerprinting. This polymorphism के अलग अलग variety of different types are there as far as these repeats are concerned. के repeats allu है, allu repeats, transpons है, retrotransponse है, deoxy transponse है. It might be microsatellite, it might be mini satellites. तो ये अलग अलग repeats के हजारों प्रकार है. उसमें से वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट ये एक ऐसा प्रकार है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. So why we are having this DNA polymorphism? Its cause is mutation. Okay, so this total cause of polymorphism is mutation. Now you know that mutation may be chromosomal mutation or gene mutation. It may be phenotypically altering mutation or it might be a silent mutation. Mutation हो गया लेकिन दिखेगा नहीं. Mutations are generally recessive, so expression of mutation require time. Okay, so see, when we are talking that the mutation is the cause of polymorphism, then see, mutation can be in a body cell, normal human cell, or the mutation can be in a germ cell. See, if body cell में mutation हुआ, adult well grown organism उसके body cell में mutation हुआ, तो वो mutation जरूरी नहीं है कि सेक्स ऑर्गन में और गैमेट्स में भी हो. ओके, सो वो म्यूटेशन वो ऑर्गेनिज्म के हद तक लिमिटेड रहेगा. इफ द बॉडी सेल इज अंडरगोइंग म्यूटेशन, दैट म्यूटेशन विल नॉट बी हेरिडेटरी. इफ एट ऑल इट कॉजेस मेजर चेंज, इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन द ऑर्गेनिज्म. Or if it is like a silent mutation, it will not be expressed, it will not be transferred to next generation, and the mutation will be there with that organism and it will be getting over after death of the organism. So somatic cell में mutation हुआ तो वो next generation में नहीं जाएगा. Population में वो हुआ है, ये भी शायद हमको नहीं समझेगा अगर वो recessive mutation है. Right? So somatic mutation is not that important as far as all these heritable polymorphism are concerned. डीएनए में जो भी बदलाव हुआ वो अगर हेरिटेबल है तो ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. आपके मम्मी पापा के पास जो डीएनए टेंडम रिपीट्स थे, जो VNTRS थे, वो हेरिटेबल है इसलिए आपके पास आए. दैट्स व्हाई आप और उनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डेवलप हो गई. अगर 100 आप अपने पेरेंट्स से 50% एग्जैक्टली सिमिलर टू मदर, 50% एग्जैक्टली सिमिलर टू फादर, ऐसे VNTRS आप रखते हो
So it is a genetic proof that they are your biological parents. Okay, so because the characteristic is heritable. Okay, so somatic cell में म्यूटेशन आया तो वो हेरिटेबल नहीं होगा. Okay, और आगे जाके हमको नेक्स्ट जनरेशन में नहीं दिखेगा. But if the mutation is occurring in germplasm, if the mutation is occurring in germplasm, then in that situation it will be passed on to next generation provided the mutation is not lethal. Means some mutant gene is developed, it goes to next generation, and that is a lethal gene. So the organism, the newborn baby who is having that mutation won't be able to survive. So that mutation will not sustain on this planet. Okay, because the organism is unable to live. It is a lethal gene. Okay, so अगर ऐसा है तो next generation pass on होके भी express नहीं होगा. Okay, then if not lethal, it doesn't affect fertility. ये जो somatic cell, ये जो reproductive cell में, germ cell में जो mutation हुआ, if it is not causing any damage to fertility of the organism, मतलब mutation होने के बावजूद वो organism fertile है, gametes बना रहा है, तो वो mutation gamete के पास जाएगा, mutated gametes fertilize होंगे और fertilization के बाद हमको next generation वो mutation carry करते हुए दिखाई देगा. Okay, so two conditions. Mutation should occur in germplasm, then only it will be heritable. Secondly, it should not be lethal, so that the next generation will not be killed because of that mutation. And thirdly, it should not affect fertility of the organism who is having that mutation in its own genome. Okay, so this is how this mutation is cause of DNA polymorphism. Okay, अब देखो, हमने लास्ट ईयर मियोसिस भी सीखा था, हमने ओवर द पीरियड एवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन का प्रोसेस भी सीखा था. When we talk about Mendel, we say that capital T was the original wild DNA, wild gene which is dominant. When this gene was replicating, something happened, some mutation happened, and the sequence of nucleotide which was regulating tallness of the plant has altered its information, and now it cannot regulate, it cannot make the plant tall, and it is regulating or making the plant dwarf. So capital T में mutation हुआ और small t बना. ठीक है, इनिशियली वो क्या था, एक पॉलीमॉर्फी था. जस्ट इमेजिन कैपिटल टी ने पहली बार डीएनए रेप्लिकेशन में गलती की और स्मॉल टी वाले न्यूक्लियोटाइड का, स्मॉल टी जीन के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनाया. सो व्हाट वाज इनिशियली, इट वाज अ म्यूटेशन. ये म्यूटेशन एक्यूमुलेट होते गया, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, और इसकी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ गई तो ये म्यूटेशन को, जिसको हम इनिशियली पॉलीमॉर्फिज्म बोलते थे, ठीक, म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म आया, ये पॉलीमॉर्फिज्म पॉपुलेशन में एक्यूमुलेट होते गया, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते गई. अब कैपिटल टी बहुत से लोगों के पास है, लेकिन स्मॉल टी भी कंसिडरेबल प्लांट्स के पास है. So now, because of increased frequency of that polymorphism, that polymorphic altered form is now called as gene. Are you getting that? So this is how first mutation happen, which leads to polymorphism. Polymorphism, if it is found in germplasm, which is not causing damage to fertility, which is not a lethal polymorphism, it transfer to next generation. Okay, somehow it is significant or it is फेवर्ड बाय नेचर. वो जो म्यूटेशन हुआ, वो म्यूटेशन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल था या एटलीस्ट हार्म में नहीं था, तो वो म्यूटेशन प्रोपोगेट होता गया, पॉपुलेशन में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई. अब वो म्यूटेशन वाले जीन को हम अलील बोलेंगे. राइट, सो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन गिवन ऑन पेज नंबर एनसीईआरटी. कम टू एनसीईआरटी रीडिंग, पेज नंबर 121. Last paragraph. A polymorphism in DNA sequence is the base of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting. Polymorphism is base of genetic mapping and DNA fingerprinting. It is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms. We know that what is polymorphism. Polymorphism is change in few nucleotide sequence. That's why the DNA fragment appear
विथ मल्टीपल मॉर्फोलॉजी। सीक्वेंस बदल गया तो वो दिखने में अलग दिखेगा, दैट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉज है म्यूटेशन। Polymorphism arises due to mutation. Recall different types of kinds of mutation and their effect that you have already studied in chapter 5. Chapter 5 में हमने ये पूरे सीख लिए हैं. And in the preceding sections in this chapter, so we discussed point mutation, frame shift mutation, chromosomal mutation, gene mutation, etc. These are all because of the change in sequence of nucleotide because of some चेंजेस, क्रोमोसोम टूट के उल्टा जुड़ गया या फिर रेप्लिकेशन में दिक्कत आई, ओके, व्हाट एल्स, एडिशन डिलीशन में बदलाव हो गया, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदल गया. सो वी हैव स्टडीड म्यूटेशन very detailed we have discussed it. New mutations may arise in an individual either in somatic cell or in germ cell. Mutation may arise in somatic cell or germ cell. सोमेटिक सेल में जो म्यूटेशन होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने की शक्यता नहीं है. वो ऑर्गेनिज्म के पास ही रहेंगे, एक्सप्रेस होंगे नहीं होंगे, और ऑर्गेनिज्म वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर किए बगैर मर जाएगा. ओके, सो द म्यूटेशंस व्हिच आर इन सोमेटिक सेल आर नॉट हेरिटेबल. ओके, सो सी, न्यू म्यूटेशंस may arise in an individual either in somatic cell or in germ cell. Cells that generate gametes in sexually reproducing organisms. If germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring, germ plasm में म्यूटेशन हुआ लेकिन वो म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन की क्षमता डैमेज नहीं हुई, it doesn't impair the ability of reproduction. In that situation, if a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to next generation. Okay, इसकी वजह से अगर ऑर्गेनिज्म स्टेराइल नहीं बना तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. इट ट्रांसफर टू अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनिज्म में ऑब्वियसली ट्रांसफर होगा. Allelic, recall the definition of allele from chapter 5. What are alleles? Alleles are the gene which are present on homologous chromosome at same location. कैपिटल T का allele है स्मॉल t. कैपिटल T में म्यूटेशन हुआ इसलिए स्मॉल t बना. Okay, see, allele sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism. Okay, पहले से हम इसको DNA polymorphism बोलते हैं. If more than one variant allele at a locus occur in human population with a frequency greater than 0.1, okay, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को अलील का दर्जा दिया जाएगा. देखिए, म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म आया, पॉलीमॉर्फिज्म की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई और वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद उसको हमने अलीलीय कैटेगरी में लाके छोड़ा. तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इट्स फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0.01. Okay, in simple term, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, if inheritable mutation is visible in the population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. Okay, mutation से variation develop हुआ, उसकी frequency बढ़ती गई और वो polymorphism ultimately allele ये form में represent करने लगा, उसका frequency बढ़ गई. The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutation in these sequences may not have any immediate impact in an individual's reproductive ability. Okay, see, you know coding sequence, non-coding sequence, बराबर. non-coding sequence पे mRNA बनता है, तो non-coding sequence पे अगर म्यूटेशन हुआ तो वो रेडिली एमआरएनए के पास जाएगा. लेकिन अगर कोडिंग मतलब जिस पे एमआरएनए नहीं बनता उसमें म्यूटेशन हुआ तो वो एमआरएनए पे जाने की शक्यता पॉसिबिलिटी कम है. The probability of such variation to be observed in non-coding sequence would be higher as the mutations in the sequence may not have immediate impact in individual reproductive ability.
तो कोडिंग स्ट्रैंड पे म्यूटेशन हुआ तो वो तो एमआरएनए के पास जाएगा ही नहीं। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में अगर म्यूटेशन होता है और वो जेनेटिक एबिलिटी को डैमेज नहीं करता तो वो एमआरएनए के पास जाएगा और खुद को एक्सप्रेस करना उसके लिए पॉसिबल होगा। These mutations keep on accumulating generation after generation and from one of the basis of variability that is polymorphism. ये accumulate होता गया उसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म हमको पॉपुलेशन में दिखता गया और अल्टीमेटली हमने उसको एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, देखिए टॉल का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ड्वार्फ, ब्लैक आई का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ब्लू आई, ब्राउन आई, ओके, ये अलील हमने ले लिया। There is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide to change to very large scale changes. This polymorphism may be just one nucleotide had changed, right? It may be a large change. ज़्यादा nucleotides में बदलाव आ गया। For evolution and speciation, such polymorphism play important role. अब meiosis सीखते वक्त हमने ये पूरा सीखा। फर्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, प्रूफ रीडिंग का काम होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, लेकिन वो गलती अगर हो गई तो वो नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होगी। अगर वो सेक्स सेल में है तो वो गैमेट द्वारा नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, फिर उसका परसेंटेज बढ़ता गया। जनरली द म्यूटेशंस आर रिसेसिव, सो इफ ऑर्गेनिज्म इज हैविंग वन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, द स्मॉल टी वोंट एक्सप्रेस बट इट इज देयर। In population, one more person is there who is capital T small t. Capital T small t is getting married with capital T small t. In that situation, there are chances that you get an organism with small t small t. Okay, so ये पूरा प्रोसेस होते 50 साल गुजर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे स्मॉल टी एग्जिस्ट करता है। बिकॉज टिल नाउ कैपिटल टी के साथ जो स्मॉल टी था वो एक्सप्रेस करने के क्षमता नहीं रखता था। जब स्मॉल टी इकट्ठा आ गए, when two recessive characters come together, in absence of dominant character, this mutant gene can express itself. Okay, so ऐसे धीरे सालों से बदलाव होता गया। Then survival of the fittest का रूल आया। Okay, एक क्लाइमेटिक कंडीशन में कैपिटल टी को फेवर किया, दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में स्मॉल टी को फेवर किया। So it is all dependent who is fit in that particular condition. Okay, so survival of the fittest में the one who is fit will get more food, will get more chances of reproduction, and that particular gene will go to majority of the population, right? Okay, so this is how वो group जो खुद को modify करने की क्षमता रखता है वो डेवलप होता गया and one fine day उसने अपने ancestor से शादी करना बंद कर दिया, right? That is new species arise which is genetically isolated from its ancestors. Okay, our ancestors are monkeys, but now we are not sexually compatible. Why? Okay, we in the course of speciation now we developed as a new species and they are our ancestors. Understood? So see, DNA polymorphism, म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, अलील फिर खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता उसने रिगेन की, फिर what we say survival of the fittest आया, then modification में some modified genes may be favored, so that group which are having that modified gene are favored by nature, and as they go on evolving they represent themselves as a new species over the years. This process requires thousands of years, but the cause is there. Understood? Okay. There is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide change to very large scale changes. For evolution and speciation, such polymorphism play a very important role and you will study this in detail at higher classes. Okay, यहाँ पे तो मैंने बस म्यूटेशन आपको ब्रीफ किया। Okay, हमारे लेक्चर में भी हमने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट सीखे थे। Okay, तो वो करते हमने अल्टीमेटली कंक्लूड किया कि पहले सिलेबस में क्या करते हैं। So all that we have discussed in additional lecture, जो मैंने additional point हमने डिस्कस किए थे वो आपको हायर स्टडीज के लिए बड़े काम के हैं। Okay, so this is what about polymorphism, its accumulation and which ultimately leads to formation of new allele, evolution and speciation. Now come back.
that this polymorphism की वजह से, okay, this polymorphism, which is one of the example, is variable number tandem repeat, how it is determining and how we are using it for giving genetic signature of an organism, that is DNA fingerprinting. So now we are discussing actually DNA fingerprinting in reference to variable number tandem repeats. See, polymorphism. Existence of more than one normal allele at a gene locus. That is also a type of polymorphism, with the rarest allele exceeding a frequency of 1%. Okay, ये frequency पे determine होता है. और polymorphism may exist at several levels. Example, variation in DNA sequence, variation in amino acid sequence, it may be in chromosome structure or it may be phenotypic trait. Polymorphism हमको अलग अलग लेवल पे डिटरमाइन होगा. So these levels can be DNA sequence, sequence of amino acid, it may be structure of chromosome, or it might be phenotypic traits. Okay, so this is all about the polymorphism. अब DNA sequence में जो polymorphism होगा उसके प्रकार हमने सीखे transponsors, ALU sequence, microsatellites, mini satellites, and SSR, short sequence repeat. They are simple and they are very common. Okay, so these are different types of repeats collectively called satellite DNA, and that is nothing but a junk DNA. See, these are the differences between VNTRS and STR. STR are simple small repeats. अब ये points लिख लो. Actually speaking, इतने डिटेल हमको है नहीं, लेकिन ये बार बार शब्द जब आंखों के सामने आते हैं तो हमको बाद में याद रखना दिक्कत होता है. तो हम सब लोग पहले 4 पॉइंट लिख लेंगे. Right? VNTRS. It is a type of tandem repeat in which a short sequence of nucleotide 10 to 6 base pair are repeated in a variable number of times in a particular locus. Contrasting point पढ़ते हैं. STR is a type of tandem repeat in which a short sequence of nucleotide 2 to 6 base pair are repeated in a variable number. So comparison, VNTRS are longer, STR are short repeats. Okay, same point continue. Consists of 10 to 60 bases. It consists of 2 to 6 bases. It is a type of mini satellite. It is a type of microsatellite. It consists of 10 to 1500 repeats in an array. It consists of 5 to 200 repeats in an array. Okay, please write down the differences. चलो डन. Understood? Let's proceed. This is example of short tandem repeats. See, the repeat are GATA, GATA. In first, 8 repeats. In sample 2, 9 repeats. And in sample 3, 10 repeats. So they are short tandem repeats. See, one more diagrammatic representation. Upper one are VNTRS, variable number tandem repeats. Right? These repeats are 4 times. Right? The repeats are 4 times. Repeat unit size is around hundreds of base pair. Okay, this is mini satellite, VNTRS mini satellite. Then microsatellite, it is short tandem repeat, STR. Simple sequence repeat, it may be SSR. Okay, so see, in first one, it is 8 times the repeats are present, and in the second,
the 20 repeats are present and the size goes on changing. So VNTRS, STR, SSR are the types of repeats only, but they are classified on the basis of the number of nucleotides in one repeat. Right? So let us discuss further with differences. माइक्रोसैटेलाइट मिनी सैटेलाइट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट न्यू पॉइंट्स, पहले 3 पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे हम. इट इज a set of sequence at a particular locus of a chromosome which varies in number in different individuals and so can be used for genetic DNA fingerprinting. Mini satellite, a form of polymorphic DNA comprising a variable number of tandem repeats. Such repeat units are up to 100, they are less in number, and nucleotide 100 nucleotide in length. These are called short tandem repeats. These are variable number tandem repeats. May occur throughout the genome, but it occurs at the end of the genome. अब हमको अलग अलग पॉइंट्स भी मिलेंगे, इतना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है. So come to ultimately concluding that what we discussed about polymorphism. Now this is ultimate polymorphism. It may be protein polymorphism, maybe enzyme polymorphism. Okay, हमने phenotypic polymorphism के बारे में भी बात की थी. It is again morphologically different structures. If it is about DNA polymorphism, then we talk about single nucleotide polymorph, SNPs. Then tandem repeat polymorph. It is microsatellite short sequence, SSR, or variable number tandem repeats. And it may be structural variants. So what are structural variants? It is insertion, deletion और duplication और transversion. मतलब हमने जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में बात की थी, वो भी अल्टीमेटली क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का पॉलीमॉर्फिज्म ही है. So this is more than sufficient for you. Now, how we use it for giving genetic signature of an organism? So come to DNA fingerprinting. Steps involved in DNA fingerprinting. Now again, same thing which we have discussed in biotechnology. Whoever you want to analyze, all the organisms, all the people which are related to crime scene, it might be a known new organism, or you are searching for new mutation in a population. Whoever is the organism, you want to analyze its genetic material. You want to compare with previously existing one. You want to compare the unknown organism's genetic makeup with the known organism genetic makeup. So for this identification, the method is you need to take cells from the source. Okay, take a cell, cause lysis of it, remove entire cell debris, obtain chromosome, remove RNA, histone, non-histone. अब आपको याद हो गए ये steps. You obtain white color, pure DNA. Right, spooling, then cut that pure DNA by restriction into nuclease. You obtain fragments which are intermingled with each other. Then, so as to separate that mixed threads of DNA, go for gel electrophoresis. Right, gel electrophoresis करेंगे तो all the DNA which are entangled with each other will separate, and like sieving effect, bigger thread will be present near the well and the smaller will travel through the media, through the pores of the gel, and you get different DNA segments. Okay, then they undergo the process of denaturation, make them single stranded, and for identifying a specific DNA को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोब्स डालने हैं. Okay, so whatever gene you want to identify, आपको VNTRS ढूंढना है तो VNTRS के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाओ. आपको अगर प्रॉब्लमेटिक जीन फैमिली में है कि नहीं ढूंढना है, हीमोफीलिया का है, राइट, कलर ब्लाइंडनेस का है, व्हाटएवर, वो जीन को ढूंढने के लिए प्रोब बनाओ. आप मैटरनिटी पैटर्निटी डिस्प्यूटेड है तो मदर फादर के जो क्रोमोसोम्स है
उनको क्रोमोसोम उनके क्रोमोसोम पे जो रिपीट्स है उसके अनुसार आपको प्रोब बनाने हैं। ठीक है, सो व्हाट एवर आपने प्रोब्स डिजाइन करने पड़ेंगे। आइडियली द प्रोब्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स आर विथ अस। ठीक है, ये अब डिस्कवरी करते करते, मेथड डेवलप करते करते जो जो प्रोब लगते हैं वो हमने डेवलप कर लिए हैं। ओके, तो जो आपने सेपरेटेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड थे उसको डीनेचर करके सिंगल स्ट्रैंडेड कराओ, रेडियोएक्टिव प्रोब उस पे छोड़ दो, right? Then probe will go and bind to complementary sequences, that is called hybridization. And now, so as to find out the location of probe, bombard it with X-ray. While bombarding X-ray, you are supposed to keep the X-ray film opposite to it. So obviously, you will get a pattern. Probe कहाँ पे attach हुए है उसका pattern आपको मिलेगा। अननोन ऑर्गेनिज्म के पैटर्न को नोन ऑर्गेनिज्म के पैटर्न से मैच करना पड़ेगा। whoever matches 100%, ओके, जो भी ऑर्गेनिज्म का पैटर्न अननोन ऑर्गेनिज्म से मैच करता है वही वो ऑर्गेनिज्म है। अंडरस्टूड, राइट? सो दीज आर द स्टेप्स। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इतने स्टेप्स लिखेंगे आपको तो पक्का 4 में से 2 मार्क आ गए। ओके, सो प्लीज राइट डाउन। फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, that is causing lysis of the cell, separating DNA, purest DNA is harvested. Then restriction endonuclease, digestion, cut the DNA. Then you will get restriction fragment length. Gel electrophoresis से separate करवा लो, denature से single stranded DNA बना लो, southern blotting, right करके you are supposed to transfer it on the nitrocellulose gel paper. Then making a radioactive probe, prepare the radioactive probe. क्रिएटिंग अ हाइब्रिड रिएक्शन, तो जो पेपर पे आपने डीएनए सेपरेट किए थे, सदर्न ब्लॉटिंग से ट्रांसफर किए थे, दैट पेपर इज फ्लडेड इन अ सॉल्यूशन इन विच प्रोब्स आर देयर। द प्रोब विल गो एंड हाइब्रिडाइज एंड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड probes, finding out the pattern. Okay, so it is autography or other methods. These are the major steps of DNA fingerprinting. How that structure appears, let's see and watch a clip. These are the bands of DNA which are giving impression on the X-ray film, and by comparing this we can find out the unknown organism or the person or the presence of that particular gene in the family. This is how it appears. See, DNA fingerprinting, this video will explain you everything. Like every organism has its unique characteristic feature, that is fingerprints, and it is its genetic identity. It is which is represented on the fingers. It is regulated by gene as well as the climatic condition. Fingerprinting का pattern हमको इस प्रकार से दिखाई देगा. Fingerprinting will be visible like this, like a barcode. Dr. Alec Jeffrey has discussed it for the first time, and it was a wonderful mechanism which is like a genetic signature. Now come to the procedure. For this you need to take blood sample. It may be semen, saliva, root hair cells, it may be skin cells, whoever having DNA. It is kept in a test tube and it is centrifuged. This is a centrifugation machine. It help in isolation. Okay, हमको अलग अलग सेल्स सेपरेट मिलेंगे, उसमें से हमने अब वो सेल्स निकाले जिनसे हमको डीएनए हार्वेस्ट करना है. So we'll put a drop of cells on the petri plate on the glass slide and we observe it. इसके अंदर क्रोमोसोम होने चाहिए. So ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है. See, we can see. Okay, this cell is the ideal material for DNA fingerprinting. अब ये क्रोमोसोम के अंदर they are trying to show you the DNA present on the condensed DNA forming a structure called chromosome. So क्रोमोसोम में जो condensed DNA है उसको हम हार्वेस्ट करेंगे. ओके, उसका ट्विस्ट निकाल देंगे, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे. सेपरेशन के लिए और लंबे डीएनए को कट करने के लिए दिस वन इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज.
it will come and determine the palindrome and cut the DNA into small fragments. This procedure is required because we cannot deal with long DNA thread at a time, so we cut it into pieces. So on the basis of location of restriction sites, it is cut, and now this DNA were flooded on agar gel. This is gel electrophoresis technique, and all clustered DNA will be separated on the agar gel. इसके पहले हमने gel electrophoresis का क्लिप डिटेल में देखा था. अब ये DNA अगैरो जेल में अल्कलाइन सॉल्यूशन डालने के बाद it will start flooding, separating from each other. This is UV radiations which will give us some visibility. Even we can use ethidium bromide, and now they are separated. Okay, now nylon nitrocellulose sheet, उस पे पूरे डीएनए हमने ट्रांसफर कर लिए. दिस इज सदर्न ब्लॉटिंग डन. नाउ द पेपर विथ द डीएनए इज kept in a tray where this yellow colored probes which are already designed are present. They will go follow the rule of complementarity and bind to specific DNA. Here the rule of complementarity is there. Probes are radioactive and normal DNA are not. Yellow colored growing one are probe which are radioactive. So as to know their location, X-ray film वहाँ पे रखनी है. This is the X-ray film which is giving impression, and now you are getting a barcode like a dark bands. Okay, so this barcode you have seen. This barcode is analyzed and compared with the person. ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न वो पर्सन से रिलेट करके देखा जाएगा जिसको हमने ढूंढना है. Okay, so this is a method of DNA fingerprinting. It is identification of an unknown organism and relating it. ये बारकोड रिलेट किए जाएंगे नोन ऑर्गेनिज्म से. When it matches 100%, we can identify the unknown organism. Okay, so this is what is DNA fingerprinting. This is a diagram given in NCERT. DNA fingerprinting. See, the diagram is very clear. You need to understand. These are the number of chromosome. Chromosome number 7. One chromosome. पेयर में का एक क्रोमोसोम फादर से आया पैटर्नल क्रोमोसोम. ये वाला मदर से आया मैटरनल क्रोमोसोम. राइट. सो दिस इज अ पर्सन. डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए. इंडिविजुअल ए का क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 60. इंडिविजुअल बी का सेम क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16 हमने आइसोलेट किया. व्हाई वी सिलेक्टेड ए एंड बी पर्सन? बिकॉज व्हेन वी इन्वेस्टिगेटेड दैट some crime scene or something happened, now you are searching for an unknown person. ये unknown person का जीनोम है, और ये स्टोरी जो भी आप एनालाइज कर रहे हो, जो भी क्राइम सीन आप सॉर्ट आउट कर रहे हो, इससे रिलेटेड ये ए और बी इंडिविजुअल्स है. ओके, सो ए और बी, ए एंड बी आर रिलेटेड टू द स्टोरी, टू द क्राइम, एंड फ्रॉम द क्राइम सीन यू हार्वेस्टेड दिस डीएनए. ओके, सो ये डीएनए में हमको क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 मिले, तो इसलिए हमने ए और बी के भी सेम क्रोमोसोम नंबर आइसोलेट किए. सो सेम मेथड. टेक इंडिविजुअल ए बी ब्लड सैंपल. ये सी जो क्राइम सीन पे है उसका ब्लड है, उसके सेल से. ऑल द 3 सेल्स आर कलेक्टेड, दे आर कॉज लीसिस. उनमें से डीएनए आइसोलेट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको कट किया. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको कट किया. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया. राइट. देन प्रोब छोड़ के हमने पैटर्न ढूंढे. सो दिस इज व्हाट इज पैटर्न. ओके, दिस इज सी इंडिविजुअल, दिस इज A1 एंड दिस इज B. सो यू कैन फाइंड आउट. देखो, C and B are matching perfectly. So the organism C, which is unknown, is the B person. Understood? So it is that simple. यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया है? Look at this.
On this chromosome, here 3 repeats are present. Here 4 repeats are present. Here more repeats. So one block represents one VNTRF. Understood? Let us read NCERT page number 122. The technique of DNA fingerprinting was initially developed by Alec Jaffe. He used a satellite DNA, that is the repeated DNA present, as a probe that shows very high degree of polymorphism. He used satellite DNA VNTRS, जिसके probes बनाए, जिसमें बहुत ज्यादा विविधता थी. It was called variable number tandem repeats (VNTRS). The technique, as used earlier, involved southern blotting hybridization using radioactive labeled VNTR as a probe is included. बायोटेक्नोलॉजी में जो हमने प्रोसेस सीखी, डीएनए आइसोलेट करना है, restriction endonuclease से तोड़ना है, then making it single stranded, then radioactive probes are spread on it and they are identified. So the method is written here. Step number 1, isolation of DNA. Second, digestion of DNA by restriction endonuclease. Third one, separation of DNA fragment by gel electrophoresis. Fourth one, transferring blotting of separated DNA fragment to synthetic membrane such as nitrocellulose or nylon. Then hybridization using labeled VNTRS probe. And the last one, detection of hybridized DNA fragment by autoradiography. Okay, a schematic representation of DNA fingerprinting is given in this diagram. The VNTR belong to a class of satellite DNA referred as mini satellite. Okay, now हमने ये पूरा discuss कर लिया. उसका mini satellite, it is having around 150, some hundreds of nucleotides in it. Then it is a small DNA sequence is arranged tandemly in a many copy number. This one repeat is present in many copy numbers. So chromosome number 7 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 repeats. Okay, so that is variable number tandem repeats. The copy number arises from chromosome. Copy number varies from chromosome to chromosome in an individual. The number of repeats show very high degree of polymorphism. As a result, the size of VNTRS varies in size from 0.1 to 20 kilobases. Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different sizes. बैंड कैसे मिलते हैं अभी हमने देखा. They are of different sizes because variable number tandem repeat का नंबर बदलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितने प्रोब अटैच होंगे उसका बैंड का लेंथ भी बदलेगा. These bands give characteristic pattern of an individual. This is a pattern. This pattern matches with this one. Gives characteristic pattern of an individual DNA. It differs from individual to individual in a population except in the case of monozygotic twins. If A and B are monozygotic twins, in that situation, the pattern will be exactly same. But I want to note it here that monozygotic twin के fingerprints एक जैसे नहीं होते because it is related to genetics as well as the condition. It is not 100% genetically regulated. So monozygotic twin, identical twin के fingerprints exactly similar नहीं होते. Then the sensitivity of the technique has been increased by use of polymerase chain reaction. Okay, ये डीएनए का नंबर अगर आइसोलेट करके हमको कम भी मिला है तो पीसीआर में ये डीएनए का नंबर हम बढ़ा सकते हैं. सो यू कैन गो फॉर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एक्यूरेसी कैन बी प्रमोटेड. Consequently, DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. Even one cell is giving you DNA which can be amplified and DNA fingerprinting can be done. In addition to application in forensic science, it has much wider application. Okay? सिर्फ फोरेंसिक डिपार्टमेंट में ही नहीं, अलग अलग जगह हमको स्क्रीनिंग जो शब्द हमने यूज किया था कि टारगेट डीएनए को स्क्रीनिंग से आइसोलेट करना है. So this is what is screening, in which probe will be complementary to the target DNA. So it is used in a variety of aspects. It has much wider application, such as in determining population and genetic diversity. Currently, many different probes are used to generate DNA fingerprints. So it is a really wonderful process which is based on old information of DNA structure, VNTRS, and modified techniques
of biotechnology. This is DNA fingerprinting. It is the genetic signature of an organism.